Hello and welcome students to my class. Let's start. Good morning, students. Today, the concept is related to electric current. Now, what you have to do, you have to see this lecture clearly. So, first of all, I would like to, before starting, I have to be go for the one thing. As you know, the atom. As you know, the atom. What does this mean for? Atom consists of what things. देखो ध्यान से छोटी छोटी बातें. What is the effect of things which are present in the atom and what the atom is consist of? See, atom consists of one thing, that is nucleus. Number second thing, electrons. Number third thing, protons. And number fourth thing, neutrons. If according to this thing, if we are going to see that the atom consists of nucleus, electron, proton and neutron, they are properly arranged into the system, in which the middle part of nucleus consists of neutron and proton, and the orbitals are present here. So if the orbitals of these things are present here, then what will happen, these orbitals are present over it, and these orbital consist of electrons. These orbital consist of electrons, means E negative. So if these are the things, that the electron are present here, this the neutron and the proton are there, then this is the structure of an atom. So a single atom consists of neutron plus proton for mass, and proton or electron is for the charges. Even electron also has a mass, but we related proton and electron as a charges. हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को चार्जेस के तौर पे यूज़ करते हैं, एंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को उसके मास नंबर पे. सो इफ़ आई गोइंग टू से कि जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. तो लाइक इस एग्जांपल, अगर हम दो प्रोटॉन्स को एक पास लाएंगे, देन टू रिपेल. दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ लाएंगे, देन इट ऑल्सो रिपेल. And if we put one proton and one electron here, then they are going to attract each other, means attract. It shows that like charges repel and unlike charges attract. Okay. Now if I go for the electric charge, it is indicated by Q, but if we go for SI unit, that is coulomb. So SI unit of charge is coulomb. और कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर, अपने सर नेम के नेम पर ये कूलम चार्ज दिया. मतलब इसको हम लोग अगर डिनोट करेंगे
तो C सिंबल से डिनोट करेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड बाय कूलम, यानी कि चार्ज को हम अगर कहेंगे तो उसको हम लोग कूलम में डिनोट करेंगे। But if we see that electron charge, the charge of an electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is there in electron, and proton just opposite plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is related to the charge. Now if I go for current, current means flow of anything. Anything means, like as example, if we go near any of the water or river, then it is called current is the flow of anything. If we go for water, that is called as water current. Means नदी के बहाव को हम लोग क्या कहते हैं? Water current. If we go for wind, then it is called as wind current. Means anything which is going to be flow is called as current. Now if I go for the thing कि हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है या चार्ज किसी के ऊपर से दौड़ाना है, सो लेट मी टेक एनी ऑफ द metal, and you already know that metal consists of atoms. Metal consists of atoms, and each atom consists of electrons. Each atom consists of electrons. So if each atom consists of electrons, then what will happen? These all the atoms, each one consists of electrons, and these electrons are flowing onto each other unidirectionally, means anywhere, like here, means they are moving here and there. They don't have any direction, means they don't have direction. So if they don't have a direction, it means they are not stable. They are not stable. So what will happen after that? So basically what will happen, the things what happening is, अभी तक आपने देखा कि जो चार्जेस थे, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्लो तो हो रहे थे, लेकिन वो फ्लो रैंडमली हो रहे थे. तो दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन इन फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको चार्ज फ्लो करना नहीं कहेंगे. चार्ज तब फ्लो होगा जब यही इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे. तो लेट मी टेक वन ऑफ द मेटल रॉड, और हम मानते हैं कि इस जगह पर एक टेप लगा देते हैं. इस जगह पर जब टेप लगाएंगे तो हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज देने पर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और अगर हम इस टेप को 1 सेकेंड मान लेते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? सो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि द चार्जेस विच आर पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर पर यूनिट टाइम. मीन्स द चार्जेस पास पर यूनिट टाइम. मीन्स जो चार्ज है वो पास हो रहा है पर यूनिट टाइम. तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं I से. तो I इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट टाइम. इट मीन्स चार्ज इज Q and the time is सेकेंड, यानी कि टाइम इज T वी कैन से, और इसकी SI यूनिट होती है कूलम,
और इसकी होती है सेकेंड. सो I इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. Now I think you understand कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट में, चार्जेस पासेस पर टाइम, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q upon T means coulomb per second. So coulomb per second, we can say these things. Now how this charge is going to be flow? How this charge is going to be flow? The charge is going to be flow by the help of anything like as a battery. Let me see that this is a battery. This is a battery or a cell which somehow consists of charges. Somehow consists of charges. In one side it is a positive charge, in another side it is negative charge. So let me make a circuit. If this is a circuit, and I put this battery here, so the positive charges are here, negative charges are here, and this bulb is going to glow. This bulb is going to glow when I join it with the terminals. Means this one is positive terminal and this one is negative terminal. So when the current is flown through this wire, it produces a light, a current. So the electrons are flown from this side to positive sides, means from negative to positive side. But in previous times, what will happen? They are saying that the charges are flowing through the positive to the negative. So we never cancel it, we accepted this thing. So charges are flowing from positive to negative. We accepted these things क्योंकि previously ऐसा कहा गया था. तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और उस फ्लो होने की वजह से ये बल्ब लाइट अप होता है. नाउ द थिंग इज कि व्हाई दिस कुड बी हैपन. ये बैटरी में ऐसा क्या होता है? सो सी, बैटरी में होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है या तो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन. Means somewhere it is of losing of electron, and somehow it is called as the gaining of electron. So the losing of electron and gaining of electron will create a type of a difference, and this difference we called as potential difference. Now what is potential difference? Actually it is a type of energy. It is a type of energy. It is a work done. It is a work done to move a positive charge across the conductor. So it is the type of a work done which is used to move a positive charge across the conductor. मतलब आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई भी चीज़ डेफिशिएंट होती है, लाइक एज एग्जांपल देयर आर दो जार हैं आपके पास, एक फुल भरा हुआ है, एक आधा भरा हुआ है. अगर हम इनके बीच में पाइप लगा देंगे तो ये अपने आप को इक्वल करने के लिए फ्लो करेंगे और ज़्यादा से कम में फ्लो होगा तब तक जब तक इनका लेवल एक बराबर नहीं हो जाता. सेम थिंग इज़ हैपनिंग देयर. अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रॉन के नहीं थे, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुलफिलमेंट है. तो इलेक्ट्रॉन
को कंप्लीट करने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन जस्ट इसी के उल्टा फ्लो करेंगे। ऐसा पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें कहा जाता था और हम लोग भी अब यही मानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस द वर्क डन इज गोइंग टू बी मूव द पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर. So this is the basic thing. So this potential difference create energy, and we indicate this potential difference as a V. We indicated it as a V. V means volt. Now the volt created a one of the formula because the work is going to be done. So work is going to be done means work done. Work done to transfer a charge. To transfer a charge means W upon Q, and the SI unit of W is, that is joule, and the SI unit of the charge is coulomb. So joule per coulomb, that is the SI unit of volt. Now you understand, I think so. If you not understand, repeat it and then again listen it. So वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन आफ्टर दैट फ्रॉम वेयर दिस हीट एनर्जी इज गोइंग टू बी, वेयर दिस हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम. सो हीट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी ये चार्जेस फ्लो होते हैं तो बीच में एटम तो है ही है. तो एटम क्या क्या क्रिएट करते हैं? जस्ट एज एग्जाम्पल, इफ आई गो फॉर द फर्दर डिवीजन, वी विल सी अबाउट द थिंग कि एटम 3-4 चीज़ें करते हैं, एंड दीज थिंग्स आर number 1 current, number 2 they created the resistance also. Why? Because the resistance can be there, and it also depend on time, because the number of the time you are going to flow the charge, जितना ज़्यादा टाइम आप इसको चार्ज को फ्लो कराओगे इसमें, उतना ही ज़्यादा ये हीट अप होगा. तो because of current, because of resistance, because of the time, that's why we can say that the heat which is present in this is directly proportional to, means the heat which is going to be flown here, the heat which is coming here is directly proportional to current, which is denoted as R, is to the resistance which is also related to the R, and means current which is related to I, and resistance which is related to the R, and the time IRT. So according to this, because of these things, the heat is going to be generated. So basically these are the terms and conditions which are going to be flow through the conductors, and the things which are present to be the potential difference energy I already take. If you have any type of the question related to this, or any type of the concept in your mind to try to us, I will make the video on that. So comment it, like it, share and subscribe it. Thank you. Have a nice day.